Hello aspirants, myself विपिन कुमार and I am an BPSC aspirant और इस बार मैंने यूपीएससी मेंस 2024 दिया है। मेरा मकसद ये वीडियो लाने का ये है कि 70th बीपीएससी जो होने वाली है उसमें थोड़ा बहुत आपको तैयारी में आपको मदद मिले, साथ में मेरा भी हेल्प हो जाए, रिवीजन हो जाए एक तरह से सारा इंडियन ज्योग्राफी और जो भी अदर सब्जेक्ट है जो आगे मैं इस सीरीज में लगाऊँ। तो मैं अगर थोड़ा अपने बारे में बताऊँ तो आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन और लगभग 2.5 साल से मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सो उसमें जो भी मैंने अपने नोट्स या वट एवर नॉलेज आई हैव गेन्ड दैट आई विल शेयर विथ यू। टुडे वी विल स्टार्ट विथ जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, that is physical geography का geomorphology part, where we will study about of course our earth. So some basic information like रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। वी ऑल नो दैट रोटेशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पे घूमे देन इट इज कॉल्ड रोटेशन, और जब किसी बॉडी का कोई ऑब्जेक्ट चक्कर लगाए देन इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। सो रोटेशन, अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड टाइम इट टेक इज 23 hour 56 minute and 4,900 seconds. If we talk about revolution, then same direction follows, that is from west to east. And because of revolution, whatever season you experience, that happens because of revolution. And that is, this revolution is the main cause of that shortest days and nights which you experience over the years. Like on 21st December, which is called as December solstice. What happened in 21st December is that southern hemisphere, that is I will show you here, like southern part, this is the southern part here, like this part here we will experience what? We will experience longest day in southern part on 21st December and shortest night in southern hemisphere. Similarly, we will experience shortest day in northern hemisphere and longest day in northern hemisphere. So this sort of things we will experience. Exactly opposite happened on 21st June, that is June solstice, where northern hemisphere जहाँ पे दिन बड़ा होगा और रातें छोटी हो जाती है, और southern hemisphere में ठीक उसका उल्टा होगा, दिन छोटा हो जाएगा और रातें छोटी. So these are the dates which you should remember, because यहाँ पे आपको ट्रिक किया जा सकता है. It's like that. Then another term is equinox. We must have heard about this. So in equinox is the phenomenon where both the poles get the same amount of sunlight. Like in December solstice or June solstice, northern hemisphere or southern hemisphere have different angles, so they receive sunlight depends on angles of incidence of rays. But when there is equinox, तब दोनों poles बराबर lights पाते हैं, और सारा पूरे वर्ल्ड में जो ड्यूरेशन होता है डेज एंड नाइट्स का वो बराबर होता है. अगेन इसमें हम आगे अगर बढ़े तो अर्थ और सन के बीच के डिस्टेंस को कैसे मैंने किस टर्म को, सो देयर इज दो टर्म्स है. वन टर्म इज दैट इज एपिहेलियन and other is perihelion. So you can see in this one, aphelion means when the distance between sun and earth is longest, then it is called aphelion, and when the distance between sun and earth is shortest, then it is called perihelion. So aphelion means distance ज़्यादा है, perihelion means distance कम है.
Similarly, there is term that is apogee and perigee. It is used for distance between Earth and Moon. So if मून एंड अर्थ का डिस्टेंस मैक्सिमम हो तब उसको बोलेंगे apogee, और अगर मून और अर्थ का डिस्टेंस मिनिमम देन इट इज कॉल्ड एट perigee. वो आप देखते हो कि मून बड़ा दिखता है तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड perigee, क्योंकि उस टाइम अर्थ और मून का डिस्टेंस कम हो जाता है. लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड्स और लैंगिट्यूड्स दीज आर द इमेजिनरी लाइंस. लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू इक्वेटर. इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होता है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर. एंड लॉन्गिट्यूड वर्टिकली जो रन करता है. दिस ऑल आर इमेजिनरी लाइंस. यू कैन सी दैट इज आर्कटिक सर्किल. सबसे ऊपर का पार्ट लाइक दिस वन इज हियर, ये आर्कटिक सर्किल हो गया. Then afterwards Tropic of Cancer 23 degree 26 minute north. This one is equator. Then comes Tropic of course Tropic of Capricorn, and then comes here comes Antarctic circle line straight line because of mouse. So this one is 0 degree 23 and half, you can consider it. Similarly, this one is 66 and half north. This one is 23 and half south. This was a 66 and half south. Here this is the North Pole, and this one is South Pole. So it's nothing. These are the things which you must remember, because these are the little mistake which we do in exams. The other one is prime meridian, which passes through Royal Observatory in Greenwich near London. And this prime meridian is chosen as a reference point, and all other longitudes were named accordingly with this. And this also this longitude part decides the international date lines, which you will see ahead. Anti-meridian, that is 180 degree. These both act as like imaginary line for international date line. So let's go ahead. Here I have, आप देख रहे हैं ये मैंने रोटेशन डायरेक्शन दिखाया है रोटेशन का. 20 ये इंक्लाइनेशन हो गया अर्थ का. और ये मैंने आपको दिखाया वो विंटर सोलिस्टिस जो मैंने ऊपर बताया था. सो 22 दिसंबर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये 21 और 22 दिसंबर को ये विंटर सोलिस्टिस ऑब्जर्व किया जाता है, तो वही शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसका उल्टा साउदर्न हेमिस्फीयर में. इक्विनॉक्स, दोनों पोल्स को बराबर सनलाइट मिलता है. डे एंड नाइट्स का ड्यूरेशन दोनों हेमिस्फीयर में इक्वल हो जाता है. देन आपने न्यूज में ये पढ़ा होगा जीरो शैडो डे. ये 2 बार ईयर में एक्सपीरियंस किया जाता है, और ये एक्सपीरियंस आप सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ही कर सकते हैं. इससे ऊपर और इससे नीचे आप जीरो शैडो डे मीन्स दिन में एक बार ऐसा आता है उस दिन कि आपका शैडो नहीं बनता है. Like there is no shadow of yours when you go out. So that's what is zero shadow day. मैंने जैसा बताया कि इंटरनेशनल डेट लाइन, ये भी एक इमेजिनरी लाइन है जो कि एक दिन और दूसरे दिन के बीच में एक बाउंड्री क्रिएट करता है, इमेजिनरी बाउंड्री. So what happened is international date line is not straight. Question is why it is not straight. Every longitude, if you will observe, then it is straight almost. So आइडियल को स्ट्रेट नहीं करने का एक रीजन है कि टू अवॉइड पॉलिटिकल डिफरेंसेस बिटवीन द कंट्रीज. अगर स्ट्रेट हो तो एक कंट्री के कई टाइम जोन हो जाएंगे. सो टू डिफरेंशिएट बिटवीन डेट वेरिएशन एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को डिफरेंशिएट
इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये सब किया गया था। इसलिए आइडियल आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, और आप इसको अराउंड 180 डिग्री के अराउंड जब अपने वर्ल्ड मैप पे देखोगे, लेट मी शो यू ऑन वर्ल्ड मैप। So this is the international deadline on right side. तो what happened, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल डेडलाइन का ये है कि जब आप when you will go from west to east you will gain one day, when you will go from east to west you will lose one day. So like अगर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आप हैं और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में आप ईस्टर्न की तरफ जाते हैं, और वेस्टर्न में अगर लाइक 21 जुलाई, तो जब आप ईस्ट की ओर जाओगे सो इट्स like you will gain one day, that is 20 July वो हो जाएगा. So it's work like this. You can observe here that आप यहाँ पे देख सकते हैं 180 डिग्री पे जब आप वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहे हो तो आप एक दिन गेन कर रहे हो, दैट इज अगर 22 जुलाई वेस्ट में है तो वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर में जाके वो हो जाएगा 21 जुलाई, और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हो तो आप एक दिन लूज कर रहे हो, मतलब आप यहाँ 21 हो वहाँ 22 में हो जाओ. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स इंटरनेशनल डेडलाइन. और ये जिगजैग इसीलिए है ताकि पॉलिटिकल डिफरेंसेज और वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज को देखते हुए क्रिएट किया गया. और एक किस्म वैसे क्या है कि व्हेन यू विल मूव टुवर्ड्स वेस्ट, that is traveling west first from the ideal, you will gain 1 hour every 15 degree of longitude crossed, while those traveling eastward loses 1 hour. मतलब हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जैसा ही आप बढ़ते जाओगे तब आप एक एक घंटा गेन या लूज करते जाओगे, डिपेंड्स कि आप किधर की ओर बढ़ रहे, ईस्ट या वेस्ट की. आफ्टर दैट now let's come on the earth especially. So in the earth we will study about तो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में हम जानेंगे कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद क्या थ्योरीज हैं इससे रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में we will study. So here we will study about formation of earth first. So as I said earlier, earth was formed about 4.6 billion years ago. तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बैंग थ्योरी हुआ, उसके बाद वहाँ से अर्थ यूनिवर्स एक्सपैंड करना चालू हुआ, मटेरियल्स जो एक्सप्लोड होके लावा के फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में थे, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगे और सॉलिडिफाइड होने लगे. अर्थ का लाइक स्मॉल पार्टिकल्स जो थे उस टाइम, वो एक साथ ड्यू टू ग्रेविटी वो एक साथ कंबाइन होने लगे, और ड्यू टू कम्बिनेशन उनका साइज बढ़ने लगा, जिसका एक अपना ग्रेविटी था, और बिकॉज ऑफ दैट ग्रेविटी दे दैट पार्टिकल्स अट्रैक्टेड मोर एंड मोर स्मॉल पार्टिकल्स टुवर्ड्स इट. और जैसा ही वो पार्टिकल उस लार्ज बॉडी के साथ कोलाइड करता था तो वो हीट प्रोड्यूस हो रहा था. हीट प्रोड्यूस होने के कारण अर्थ जो था एक मोल्टेन बॉल के रूप में डेवलप हो गया, एज ह्यूज मोल्टेन बॉल, जो अभी हम देखते हैं अर्थ को सैटेलाइट इमेज जो आप देख रहे हो. सो व्हाट हैपेंड इज अब इस हॉट मोल्टेन बॉल ऑफ मास में क्या हुआ, जो हैवियर एलिमेंट था वो सेंटर पे जाके ग्रेविटी के कारण सेटल हो गया. जो सेंटर पे जाके सेटल हुआ वो लाइक निकेल एंड आयरन, जो कि कोर का पार्ट है, आगे देखेंगे. तो कोर पे जाके निकेल और आयरन सेटल हो गए, और कोर आज भी आगे देखेंगे कि कोर दो पार्ट में, सो वहाँ पे सेटल हो गया. उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अर्थ ठंडा होने लगा बहुत सालों बाद, आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन एंड इट्स अपर सरफेस लाइक क्रस्ट पार्ट जो है वो ठंडा होना चालू हो गया, और धीरे धीरे वो सॉलिडिफाइड, ठंडा होने की वजह से वो सॉलिडिफाइड होने लगा और लूजली पैक था. आफ्टर वर्ड है उसके बाद फिर चूंकि अर्थ अंदर से अभी भी गर्म है, तो वोल्केनिक इरप्शन टुक प्लेस. वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण क्या हुआ कि बहुत सारा मोल्टेन मटेरियल्स और गैसेस अर्थ सरफेस पे रिलीज हो गया. देन
आफ्टर जो गैस बाहर आया तो फेज ऑफ गैसिफिकेशन स्टार्ट, उसको कहते हैं फेज ऑफ गैसिफिकेशन स्टार्ट हुआ, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण बाहर आया था। ह्यूज अमाउंट ऑफ गैसेस में लाइक NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, all this came out on earth's surface. What happened with these gases? वाटर वेपर का फॉर्मेशन हुआ, वाटर वेपर के कारण क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्लाउड फॉर्मेशन इतने लार्ज अमाउंट में हुआ कि जो सनलाइट अर्थ पे आ रहा था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, लाइक अर्थ पे कोई सनलाइट नहीं था। और ये क्लाउड फॉर्मेशन के कारण अर्थ पे कई हजार साल तक कंटिन्यूअस रेनफॉल होते रहा, एकदम मूसलाधार बारिश इसको कह सकते हैं, और पूरा अर्थ सबमर्ज हो गया, अपर लेयर ऑफ अर्थ इज सबमर्ज अंडर वाटर। सो पानी के कारण जो अपर सरफेस ऑफ अर्थ था वो ठंडा होना चालू हो गया, इट स्टार्टेड कूलिंग, और जैसे जैसे ठंडा होता है इट बिकम्स मोर हार्ड, मोर रिजिड अगेन, पर स्टिल देयर इज अ हीट ट्रैप्ड इनसाइड द अर्थ, जिसको रेसिडुअल हीट के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी इंटीरियर में फेनोमेनन हो रहा है लाइक वोल्केनिक इरप्शन, even earthquake, all these phenomena are happening because of that residual heat. So if we talk about interior of earth, then basic information that is radius of earth is approx 6400 kilometers is the radius of earth, that is from core to crust, that distance is 6400 kilometers. Upper interior of earth we can divide it in three parts: crust, mantle and core. So before we study about crust, mantle and core, how we know about that crust, mantle और core के बारे में पता कैसे चलता है? तो there are two methods, one is direct source and other is indirect source. Indirect source we know about volcanic eruption and earthquake, these are the direct source, जिससे हमें अर्थ के बारे में पता चलता है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या मटेरियल है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, हाउ इट इज। इनडायरेक्ट सोर्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट सोर्स में आपका आ जाएगा लाइक मेटियोराइट्स, जो ऊपर से फ्रॉम स्पेस जो अर्थ पे आके गिरता है, उससे भी हम पता लगाते हैं कि अर्थ किस हिसाब से बना हुआ है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, क्या मटेरियल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। फिर मैग्नेटिक फील्ड से भी पता लगा सकते हैं कि क्या रिसोर्सेज अर्थ के अंदर हैं। अब लेयर ये आप देख सकते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर ये डिवाइड हुआ है, अर्थ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं आगे, और जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट से मेंटल की ओर बढ़ेंगे, मेंटल से कोर की ओर बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और इस टेम्परेचर इंक्रीज को जो नीचे ट्रैप्ड हीट है, दैट इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वी कैन आल्सो रेफर एज जियोथर्मल ग्रेडियंट, जिसके वजह से अर्थ के सारे एक्टिविटी होते हैं, वोल्केनिक इरप्शन, earthquake, earthquake, plate tectonic movement is all happened because of this residual heat, that is geothermal heat. So it's a structure of earth. सबसे uppermost part is the crust, which is solid in nature or brittle, so it's not that hard or not that soft. If you talk about Earth's crust, then oceanic crust is of 5 kilometer in width and continental crust is of 30 kilometer of width. So, and this thickness varies from place to place. It's not fixed. It varies from place to place. Continental crust जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ था, तो इसका जो डेंसिटी वो ओशियनिक crust से कम होता है. So continental crust will always be lighter than oceanic crust, and oceanic crust is made up of basalt, जिसका डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है. ये why I am talking about density, we will see it later. Second part is mental, जो 2900 किलोमीटर के डेप्थ तक पाया जाता है, और मेंटल पोर्शन जो क्रस्ट के नीचे होता है.
ये अप्रोक्स 68% ऑफ अर्थ के मास को होल्ड करता है. अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल इज सॉलिड, बट उसके नीचे जो क्या होता है वो फ्लूइड स्टेट में है. लाइक ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जिसको एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं. इट इज मतलब lower most part of mantle is in semi-molten state due to thermonuclear reaction which continuously occur there. This inner mantle is the main source of magma during volcanic eruption. If we talk about core, most interior part of the earth, core makes up about approx 30% of earth mass, and it is made up of iron and nickel because these two are the most heaviest element. So it is settled at center of the earth. Recently एक न्यूज आई थी द हिंदू में that area in inner core has greater density of iron and nickel. Inner core, that is, core is also divided into two parts. The discontinuities inside the earth आप इसको देख सकते हो. मैंने इसको like Conrad discontinuity, that is discontinuity between upper crust and lower crust. Similarly, if you talk about Mohorovic discontinuity, that is discontinuity between lower crust and upper mantle. Rapid discontinuity between upper and lower mantle, and Gutenberg between lower mantle and outer core, and Lehman discontinuity between outer core and inner core. मैंने इसको कैसे याद किया था, ये एक एक्रोनिम्स बना लिया था मैंने मोरेगुले करके. लाइक आप कुछ अपना क्रिएट कर सकते हो. फॉर मी इट्स लाइक मोरेगुले, that is Mohorovic, Repti, Gutenberg and Lehman. यहाँ पे Mohorovic हो गया between lower crust and upper mantle, Repti between upper mantle and lower mantle, Gutenberg between lower mantle and upper core, and Lehman between lower core and inner core and outer core. प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी कि अर्थ एज अ होल, अर्थ में सबसे ज्यादा क्या एलिमेंट्स पाए जाते हैं. सो एज अ होल इफ यू टॉक अबाउट देन आयरन इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड इन अर्थ एज अ होल. सेकंड नंबर पे आप ऑक्सीजन, थर्ड पे सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, देन सल्फर, निकल, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम. समरी तीसरी होगा. If we talk about Earth's crust specifically, then oxygen सबसे ज़्यादा Earth crust में पाया जाता है. उसके बाद सिलिकॉन, then aluminium. ये क्वेश्चन पूछ चुका है ये समय पहले, so be aware of this. And अब हम rocks की बात करें तो rocks are mineral aggregates with a combination of properties of all the mineral traces. So rocks are what? The volcanic eruption से जो मैग्मा बाहर आ रहा है वो ठंडा हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है और वो रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है. ना, इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि वो किस प्रकार का रॉक. इग्नियस रॉक होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स होगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा. ये टाइम और प्रेशर पे डिपेंड करता है. So rocks can be divided into igneous, sedimentary and metamorphic. Igneous rocks formed after cooling down. igneous rocks कैसे फॉर्म हुआ? जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से मैग्मा सरफेस पे आ रहा है, वो जब ठंडा हो रहा है तो वो igneous rocks का फॉर्मेशन हो रहा है. वो प्राइमरी रॉक्स. एंड आफ्टर दैट formation of igneous rocks, these two sedimentary and metamorphic rocks will form. such that sedimentary rocks का formation डिपोजिशन की वजह से होता है. डिपोजिशन किसकी वजह से होगा? weathering phenomena. It can be natural or artificial both. Then metamorphic rocks, sedimentary के बाद metamorphic rocks. It is formed due to huge amount of pressure on igneous or sedimentary rocks. Particles arrangement and properties changes due to high pressure. Depends on pressure and temperature. Like marble जो फॉर्म होता है वो एक मेटामॉर्फिक रॉक्स है. If you talk about igneous rocks, then two types के होते हैं. एक intrusive igneous rocks and other extrusive igneous rocks.
So intrusive like diorite, granite, these all are formed on वोल्केनिक इरप्शन के दौरान कुछ लावा जैसे हुए थे जो पूरी तरह से सरफेस पे नहीं आ पाते, वो उस चैनल में ही रह जाते हैं. तो those are the intrusive igneous rocks. And similarly, if we talk about extrusive igneous rocks like basalt, these are the rocks erupt onto the surface, resulting in a small crystal as the cooling takes place quickly. These rocks, like so this is sedimentary rocks के अगर बारे में और बात करें तो ये these fragments typically travel and gather in depressions such as lakes, seas, and over time accumulate, compact, and turn into solids. These rocks can offer clues about their deposition environment, example rocks with preserved lake fossils like found in Kanwata. Even sedimentary rocks are also mechanically formed, organically formed, and chemically formed like potassium. So these are the, in brief, I am talking about right now. I am talking about the earth. Later we will explain in detail. In second part, we will study about theory related to Earth, like origin of Earth और continents का formation कैसे हुआ, उससे related जो भी theory है, second part of video I will provide it. So, thank you so much. If you like video, then please like it, share it, and subscribe. Thank you.